Welcome back. Now the next topic is life cycle of all the different kind of plants. So if we talk about life cycle and alternation of generation, what is that? अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो प्लांट के बॉडी में हैप्लॉइड फेज डिप्लॉइड फेज दोनों ही हमें दिखता है एंड हैप्लॉइड फेज एंड डिप्लॉइड फेज बोथ कैन बी डिवाइड बाय माइटोसिस. मतलब अगर हैप्लॉइड वाला पार्ट माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है तो फिर हैप्लॉइड ही बनेगा अगला जनरेशन. अगला आफ्टर द सेल द न्यू सेल्स विल बी एंड डिप्लॉयड इफ डिवाइड्स बाय ऑफ कोर्स माइटोसिस से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिप्लॉयड विल बी डिप्लॉयड ओनली. ठीक है. नाउ जो हैप्लॉइड पार्ट होता है प्लांट का दैट अंडरगोज माइटोसिस, cell division and gametes are formed after mitosis. Because this is haploid, gametes are also haploid. Okay. And this haploid phase is basically gametophytic phase. The gametophytic phase is haploid phase. अब diploid phase. Diploid phase क्या है? Sporophytic phase. Sporophyte बनेगा कहाँ से? By the fusion of gametes. जो gametophyte ने gametes produce किया that will fuse. And after fusion sporophytic main body will be formed, that is diploid. क्या है ये? Diploid है. अब this sporophytic phase will go cell divide by meiosis. meiosis के थ्रू ये डिवाइड होगा and haploid spores will be formed. अब ये haploid spores डेवलप होंगे haploid gametophyte. Easy ना? gametophyte कहाँ से बना? स्पोर्स के डेवलपमेंट से. स्पोर कैसे डेवलप हुआ? माइटोसिस से. स्पोर्स भी हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड. ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस से. दो गैमेट्स का होगा फ्यूजन. आफ्टर द फ्यूजन डिप्लॉइड सेल विल बी फॉर्म्ड दैट विल बी स्पोरोफाइट. बेसिकली स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी विल बी फॉर्म्ड and sporophytic, and so like this life cycle will be going on. So if we talk about the sporophytic gametophytic phase, these are found in the plants. In some plant gametophyte is dominant like algae, that is called haplontic kind of life cycle. In some plants diplontic life cycle is found in which the sporophytic generation will be dominant. Okay. And such kind of plant which shows sporophytic generation as dominant and for a short time the gametophyte will come is examples are gymnosperms and angiosperms. Then the another type is haplodiplontic. haploid भी है diploid भी है, दोनों बराबर में चल रहे हैं. इसके examples moss and ferns, bryophytes and pteridophytes. Now a little bit discussion about haplontic. haplontic में होगा क्या? जाइगोट्स कहाँ से बने? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से. ये जाइगोट मियोटिकली डिवाइड करेंगे मियोसिस से. देन स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड विच आर हैप्लॉइड. स्पोर्स माइटोसिस सेल डिवाइड होगा माइटोसिस के थ्रू. देन गैमेटोफाइट विल बी फॉर्म, दैट इज द डोमिनेंट ओवर दिस हैप्लॉन्टिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल. एंड गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस होगा और फिर वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस के थ्रू. क्लियर? ओके. दिस इज हैप्लॉन्टिक. Now diplontic. Diplontic में main body sporophyte body. Sporophyte body will go by meiosis and produce the spores which will develop into gametophyte plant body. अब ये gametophyte plant body जो है वो zygote form करेगा. How? By the fusion of gametes. Fusion of gametes से. Then sporophytic पार्ट आएगा. अब यहाँ पे अगर हम हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक में डिफरेंस देखो तो देयर इज नो स्पोरोफाइट फेज ओवर हियर. बस जाइगोट आया डिप्लॉयड बट नॉट एनी स्पोरोफाइट काइंड ऑफ फेज एंड दैट जाइगोट क्विकली गोज फॉर मियोसिस एंड स्पोर्स आर फॉर्म्ड. बट हियर स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट एंड मेन एंड गैमेटोफाइट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Now the third one is haplodiplontic. दोनों ही फेज लंबे टाइम के लिए होंगे. In haplodiplontic phase, what happens after the fusion of the gamete zygote which are diploid? Zygote will develop into by the mitosis sporophyte होगा diploid. Then उसमें meiosis होके spores will be formed and the spores will grows as gametophyte mitosis के through. Then after that gametogenesis gamete will formed. Then syngamy zygote. ऐसा लग रहा है सुन के कि all are quite similar. बट फर्क क्या है? इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट, इसमें बोथ आर कम्स फॉर अ
ऑलमोस्ट इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। फर्क ये है कि इन द ब्रायोफाइट द गैमेटोफिटिक इज डोमिनेंट फ्री लिविंग एंड यू कैन से फोटोसिंथेटिक फेज, जिसके ऊपर स्पोरोफाइट फेज डिपेंड करता है। स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट इन द ब्रायोफाइट्स, बट इन द टेरिडोफाइट the sporophyte is dominant. It is mainly photosynthetic body, and gametophyte is found for a short period of time, but this doesn't depend upon sporophyte. Actually it is also photosynthetic. ये फर्क है bryophyte and pteridophyte में. In the bryophyte, sporophyte completely depend upon gametophyte. In the pteridophyte, sporophyte is dominant, but gametophyte doesn't depend upon sporophyte. Okay, so this is haplodiplontic phase. अब there are few plants जिसमें कि almost 3 हमें मिलता है, जैसे algae mostly haplontic, but few algae are diplontic. What are those? Those are most few algae like fucus are diplontic, and few algae are haplodiplontic as well, like ectocarpus and Polysiphonia and kelps are haplodiplontic, and fucus is diplontic, rest of the algae are haplontic. Clear? So here the plant kingdom, that is our chapter 3 completed. Next chapter will be animal kingdom, that is chapter 4, the last chapter of our unit 1, diversity in the living world. Okay, bye bye.